Hey guys, welcome to my channel Learn with Hina. So if at all you are new to my channel, please do subscribe the channel and press the bell icon to get all the notification about the latest video. You can also join Telegram channel. The channel name is also Learn with Hina. Do follow me on UNACADEMY. Just type my name Hina Jain and from there you can easily follow me and you can have an access to all my courses. So all my courses are available free of cost to you only. So please go have a look on all the courses. Do provide ratings and reviews for all the courses. If at all you like the way I teach you, do dedicate me heads for the same. So guys, as I told you, I will be coming up with commerce MCQ series, but due to some problems in my laptop, I was unable to prepare the PPT for the same and even the recording. So, but now everything is fine. So I will be coming up with MCQ series in the next week. Okay, so I hope you will be waiting for it, but soon you will get it. So now, today I am going to start in this video about accountancy, that is our accounting unit, that is accounting and auditing unit, which belongs to commerce paper 2. So firstly, we will try to understand what is bookkeeping. Bookkeeping क्या होता है? So I will try to maintain the video duration for 10 to 15 minutes so that it will be not boring for you to watch it. So if at all you are facing then also the video is too lengthy, then please let me know about this same. Now, firstly, bookkeeping includes recording, storing, retrieving of financial transaction for a business, non-profit organization, that is NPO or charitable trust, individuals, that is sole proprietor, etc. So bookkeeping क्या include करता है? So mainly it includes record करना, information को store करना, उसे retrieve करना, क्या जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है किसके, बिजनेस के हो गए, चैरिटेबल ट्रस्ट के हो गए या कोई भी इंडिविजुअल के हो गए, तो उसे हम बुक कीपिंग कहते हैं. नाउ हियर आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ बुक कीपिंग. सो यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं, जस्ट रीड आउट कर लेंगे. जस्ट एक बेसिक आइडिया है कि बुक कीपिंग क्या होता है. सो बिलिंग फॉर गुड्स sold or services provided to the clients, recording receipt from customers, verifying and recording invoices that are received from the suppliers. If you are paying to your suppliers, then you are recording about the same. Processing employees' pay and the related government reports. Like if you are paying tax, then you will record it in your books. Monitoring individual account receivable, like if at all you have to receive some of the payment from your customer, then you will be recording it as your data in your book. Recording the depreciation and other adjusting entries, like if at all you are having any outstanding amount or any prepaid amount, then you will be recording the same and providing the financial report. Now, today the bookkeeping is done with the use of the computer software. For example, QuickBooks from Intuit is a low-cost bookkeeping and accounting software package that is widely used by the businessmen in USA. Another one, bookkeeping requires knowledge of debit and credit. So if at all you don't know what will be coming in your debit side and what you should do in your credit side, or which amount you should credit or debit, then you cannot maintain the book in a proper form. So firstly you should understand which things you have to debit and which things you have to credit, and a basic understanding of the financial accounting, which includes the balance sheet and the income statement, or either I can say it as profit or loss statement. So this is the basic idea about what is bookkeeping. Next we are going to study what is accounting. Accounting is the process of recording financial transaction pertaining to a business. So it records only to the transaction which are related to the business. The accounting process includes, now this is important, what it includes. It includes summarizing, analyzing and reporting this transaction to oversight the agencies, regulators and the tax collection entities. So basically it involves what? Recording transaction, then analyzing it, interpreting it, summarizing it and then reporting it. Now the first we are going to understand one by one each term. So first we will understand what is recording. The primary function of accounting is to make the records of all the transactions that the firm enters into. So first primary function क्या होता है?
कि वो रिकॉर्ड करे जो भी ट्रांजैक्शन एक फर्म के अंदर वो कर रहे हैं। अभी सपोज आपने गुड्स सेल किए हैं, ठीक है, क्या आप ऐसे ही छोड़ दोगे यार कुछ नहीं, चलो 2 दिन 3 दिन बाद में मैं एंट्री मार लूंगा? नहीं, यू हैव टू रिकॉर्ड इट देन एंड दैट एट दैट पर्टिकुलर टाइम ओनली। क्योंकि अगर आप बाद में सोचोगे ना तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स बढ़ जाएंगे एंड देन you will not record it. Recognizing what qualifies as the transactions and making a record of the same is called as bookkeeping. अगर आप कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को रिकॉग्नाइज करते हो और उसे रिकॉर्ड करते हो तो उसे हम बुक कीपिंग कहते हैं। बुक कीपिंग जो है ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है, नैरो रहता है स्कोप में, और अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो ये बहुत ही बड़ा पार्ट है अपने आप में। फॉर द पर्पस ऑफ recording, accountant maintain a set of books. Their procedures are very systematic. एक systematic तरीके से कैसे आप proper date wise transactions record करोगे. Nowadays computers have been deployed to automatically account for transactions as they happen. So जैसे जैसे transaction होते हैं computers के अंदर हम आज के software की मदद से transactions record कर लेते हैं. Next is summarizing. Recording for the transaction creates raw data. Pages and pages of raw data are of little use to an organization for decision making. For this reason, accountant classify data into categories. अलग अलग categories में classify करते हैं. These categories are defined in the chart of accounts. As and when the transaction occurs, two things happen. Firstly, an individual record is made, and secondly, the summary record is updated. For example, a sale to Mr. X for ₹100 would appear as, सपोज आप सेल कर रहे हो, ठीक है, मिस्टर एक्स को, तो उसका ट्रांजेक्शन आप कैसे करोगे? सेल्स टू मिस्टर एक्स फॉर ₹100। तो इस तरीके से आप ट्रांजेक्शन आपके रिकॉर्ड करोगे और आप बाद में एक समरी नोट भी बना लोगे जिसे हम नरेशन भी कह सकते हैं। Next comes reporting. Management is answerable to the investors about the company's state of affairs. So company कैसे काम कर रही है इसके ऊपर आपको एनुअल बेसिस पे आपकी एजीएम जो एनुअल जनरल मीटिंग रहती है उसके अंदर आपको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो रहते हैं वो सबमिट करते हैं रिपोर्ट शेयर होल्डर्स के सामने, और ये वेरियस स्टेक होल्डर्स जो होते हैं उनको हेल्प करता है ताकि वो डिसीजन ले सके कि इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। The owners need to be periodically updated about the operation that are being financed with the money. For this reason, there are periodic reports which are sent to them. Usually, the frequency of this report is quarterly. So quarterly ये report send की जाती है, मतलब पर्टिकुलरली इतने महीने में हमने ये काम किया है, ये आप देते हो और बाद में एट द एंड आप आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट भी उन्हें सेंड करते हो। एंड देयर इज़ वन एनुअल रिपोर्ट, वही मैं बोल रही थी, एनुअल रिपोर्ट आप सेंड करते हो उन्हें फॉर ऑल द 4 क्वार्टर्स, ठीक है। रिपोर्टिंग इज यूजुअली डन इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप ऐसे ही कोई बोलते ना रफ पेपर पे लिख के उन्हें नहीं भेजोगे, आप प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने प्रिपेयर किया है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, आपके बैलेंस शीट, वो प्रॉपर फॉर्मेट आप उन्हें पूरा का पूरा बैलेंस शीट ही सेंड करोगे। These financial statements are regulated by the government bodies to ensure that there is no misleading financial reporting. तो ये गवर्नमेंट बॉडीज भी रेगुलेट करती है कि ताकि कोई भी रिपोर्ट के साथ में छेड़छाड़ करके उन्हें सबमिट ना करे। नेक्स्ट है आपकी एनालाइजिंग। अकाउंटिंग एंटेल्स conducting an analysis of the result. After results have been summarized and reported, meaningful conclusions need to be drawn. Management must find out its positive and negative points. Accounting helps in doing so by means of comparison. So it compares. It is a common practice to compare the profit, cash, sales, asset, etc. with each other to analyze the performance of the business. So how the business is performing. अब analysis जो ये रहेगा ये आपस में कर सकते कंपनी का ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पे, जैसे कि मान लो आपके 2019 में कितना आपने कमाया है, 2020 में आप कितना कमा रहे हो, दोनों के बीच में आप कंपेयर कर सकते हो। आइदर आप आपके कॉम्पिटिटिव फर्म के साथ में कंपेयर कर सकते हो। तो ये एक बेसिक आइडिया था कि अकाउंटिंग क्या होता है। सो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वहाँ पे हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं आपके अकाउंटिंग के।
सो मैं नहीं चाहती हूँ कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाए, इसलिए मैं आपको टुकड़ों टुकड़ों में थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स करवाऊंगी, ताकि आपके लिए भी ईजी हो जाएगा कि हाँ चलो मैम की एक वीडियो अपलोड हो गई है चैनल पे, फटाफट जाओ 10-15 मिनट की वीडियो देख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट वीडियो का वेट कर लो, नेक्स्ट वीडियो आएगी 10 मिनट उसके लिए निकाल लो। तो इस तरीके से आप आपकी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। अगर आपको ये आइडिया पसंद आता है मेरा, तो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि ऐसा करना सही है या नहीं है। एंड वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, हो सके उतने आपके अलग अलग ग्रुप्स जो भी आपके पास में है वहाँ पे मेरे चैनल की वीडियो शेयर कर लेना, ताकि मैक्सिमम पीपल यहाँ पे आ सके, वीडियो देख सके एंड उनकी हेल्प अच्छे से हो सके। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।